Hi everyone, Ashish Kyal here and welcome to Ashish Kyal Trading Gurukul. It's fantastic to have you all here. And दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि why you have to look at the markets, combine it with time cycle and how to look at it in a very systematic fashion. यहाँ पर एक बहुत ही important चीज है कि हमें मार्केट को क्या टाइम किया जा सकता है. इज इट पॉसिबल टू टाइम द मार्केट and if yes, why and how it has to be timed? Everything we are going to look at it in a very simple and systematic way. And हम देखेंगे कि कैसे अभी ongoing मार्केट में क्या करना चाहिए, कैसे देखना चाहिए मार्केट को, कैसे साइकिल्स वर्क करेगा. And if you are trading with me, you might be seeing that every single time, if you are following me on Twitter, of course, you might have been seeing that every single time we have been able to do that very clearly, able to time the market. और पूरे 10 दिन में अगर आपने देखा होगा, every single time market has reversed on the upside precisely the way we were expecting it to. And हम ये बहुत ही सिंपल वे से देख सकते हैं, बहुत इजी तरीके से देख सकते हैं अगर हम चार्ट पे मार्केट के टाइम साइकिल को देखें. अभी हम यहाँ पर चेक करेंगे very simply. We are going to look at the markets in by combining it with the concepts of 55 days cycle. 55 days cycle के बारे में मैं आपको बताऊंगा. 55 days cycle के बारे में बहुत ही सिंपल चार्ट है और ये जो मोमेंटम अभी कम होते हुए लग रहा है. सो वी कैन क्लियरली सी देयर इज decrease in the momentum is what we can clearly make out from the overall charts. And I'm going to show that chart across to every one of you, why the momentum is reducing and how we can use that as a method in order to identify when the momentum is going to increase back again. तो एक डेट है दोस्तों 16th of August, जहां से मार्केट में फिर से मोमेंटम बनेगा. अभी फिलहाल मार्केट लग रहा है कि साइकिल 55 डेज वाला साइकिल जो हम यूज करते हैं वो शायद टर्न होने वाला है. एंड वी कैन क्लियरली सी दैट. आई एम गोइंग टू शेयर अक्रॉस चार्ट वेरी क्विकली along with all of you. एंड यहाँ पर अगर हम चार्ट देखेंगे, आर यू एबल टू सी द चार्ट हियर, एवरी वन ऑफ यू? दिख रहा है चार्ट? And if you are able to see this chart here, you can clearly make out that there is a center cycle which is known as a 55 days cycle. From this center cycle, ये what is a cycle? देखिए दोस्तों, हर चीज टाइम से चलती है. Everything is governed by time. And 365 days in a year, we have 24 hours in a day. We can clearly see the solar cycle of 11 and a half, 12 years, lunar cycle of 28 days, and this everything is cyclical. हर चीज रिपीट होती है दोस्तों. And बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है when everything is repeating, you can apply the same concept even in stock market. So J.M. Hurst, who was an aeronautical engineer, he used certain techniques of time and he looked at physics and said these are the techniques of time which is working in the market. So can we apply these techniques of science on stock market? And he came out with certain standard parameters. He came out with the method of standard parameters which are like 7, 14, 28, 56 as the standard number. And he said that if you are using these standard numbers, you will have to then find out cycles around this range. Now, by using that standard number, I came across with a cycle on Nifty, which is around 56, 55 period, which means that the black line, जो देख रहे हो अब, रेड और ब्लू की बात मैं नहीं कर रहा, वो ये वीकेंड पे हम बात करेंगे. एंड वी कैन क्लियरली सी दैट यहाँ पर ओवरऑल ये जो लाइन है, दिस लाइन टू दिस लाइन, वी आर गोइंग टू बी हैविंग अप्रोक्सीमेटली 55 candles. So usually the topping process, usually not always, the topping process starts from the middle of the cycle. So how does it work? It works from this cycle to the next cycle. So we are measuring 55 days. Within this 55 days, we have completed approximately 34 trading sessions. 34 trading sessions जो आप यहाँ पर देख सकते हो. So Nifty is already
अगर आप देखोगे निफ्टी इज ऑलरेडी 34 ट्रेडिंग सेशंस from the 55 days cycle. Already 34 trading sessions from the 55 days time cycle. And since we are already 34, topping happens around the middle. So we are entering into the topping zone as per the time cycle, entering into topping zone as per टाइम साइकिल। और ये पहली बार आप देख रहे होगे मैं इस साइकिल की बात कर रहा हूँ, बहुत टाइम से मैंने नहीं की थी। आई वॉज सुपर बुलिश एंड वी आर राइट देयर, एंड वी आर राइट देयर एज पर द गेन लेवल्स आल्सो ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है। आज के दिन का हाई देखोगे ज्यादा पॉइंट्स नहीं है, वी आर ऑलमोस्ट देयर। सो क्या इसका मतलब है यहां से फिर भी मार्केट बाय ऑन डिप्स पे? यस, निफ्टी स्टिल रिमेन्स ऑन इन बाय ऑन डिप्स फ्रॉम हियर, बिकॉज despite of that we are in topping zone, we might be still having short term bias। यहाँ पर अभी तक हमें close below prior day low with the 3 candlestick rule नहीं मिला। So we can clearly say that we are entering into topping zone as per this cycle and time to be cautious। ठीक है, cautious not bearish here। तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशन होता है। cautious का मतलब होता है कि हम bearish नहीं है, हम cautious है। Cautious means we can expect markets to go down, which means buying call option will not make money। हुआ है आपके साथ में that buying the call option is not giving us money, but selling call option can help। Call option or put option can help। Are you able to see the screen, every one of you? So we can clearly see that there is a very important indication of Nifty right near the channel, and we can possibly reverse। So this is the concept of time, and once we see this concept of time, we can see that the next cycle is going to be on 16th August। नीचे अगर आप डेट देख पा रहे हो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 16th August पे आसपास ये जोन है, वहां पर से फिर से मोमेंटम बन सकता है। Also, prices are near the upper end of the range, which means time to be cautious now। आपने देखा होगा मैं सुपर बुलिश हुआ था अराउंड these levels, and now I have turned cautious because prices are near the upper channel। Time cycle is now headed there। So time is a very important element दोस्तों, और time के बेसिस पे अगर आप देखोगे तो you can clearly see यहाँ पर just a second, हाँ, you can see that यहाँ पर ट्रेड किया जा सकता है। इसके साथ में एक और कॉन्सेप्ट है टाइम साइकिल का, जिसे हम कहते हैं एफएलडी। एफएलडी का मतलब है फ्यूचर लाइन ऑफ डिमार्केशन। एफएलडी के बेसिस पे वी कैन आइडेंटिफाई दैट व्हेन इज द पॉसिबिलिटी फॉर मार्केट्स टू रिवर्स एंड हाउ मच कैन इट गो। सो वी आर गोइंग टू डू इट इन मच डिटेल। हमारा ये वीकेंड पे दोस्तों 2 दिन का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, सैटरडे एंड संडे को, काल चक्र के नाम से, in which we are going to look at these concepts in a very detailed fashion। इस कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करेंगे, विल कंबाइन दिस विथ एफएलडी टाइम, एफएलडी टारगेट्स के लिए। एंड इफ यू कंबाइन अलोंग विथ केएसटी एंड प्रिंग स्पेशल के, लेट मी show Pring Special K also as an indicator। Let me apply that on this chart and share it with you। It's a very classic indicator जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन दी अपकमिंग प्रोग्राम। प्रिंग स्पेशल के, ये जो इंडिकेटर है दोस्तों प्रिंग स्पेशल के, यहाँ पर हम बहुत क्लियरली अप्लाई करेंगे 1 आवर चार्ट पे। डेली बहुत बड़ा हो जाता है, we can apply it on hourly chart and see how is the momentum looking on the Pring Special K and how it is moving and how it provides a classic reversal areas। Can you see that? If you are seeing this chart, are you able to see this chart here, every one of you? How to look at this chart? Okay, दिख रहा है सबको चार्ट? Okay, here there is, I have applied a Pring Special K indicator, and this Pring Special K indicator helps to understand the overbought zone। So can you tell me which is the overbought zone if you're looking at this indicator? Everyone?
सो यहाँ पर अगर आप देखोगे, we can clearly see 80 as the level from where the price have been reversing on the downside. Okay, and we can see that every time it has reached towards 80. See, I'm not bearish. I'm just going to be cautious because every time I'm just going to remove this for now. And every time we reach around this zone, we can see some kind of a reversal happening. So इसके साथ में simple moving average भी आप combine कर सकते हो. That gives you a lot more insight once you combine this with the simple moving average on the indicator itself. It gives a lot more insight when you do that. And यहाँ पर बहुत ही important हो जाता है दोस्तों. I'm not getting into wave count. I'm going to talk about very clearly the Pring Special K indicator. So on Nifty, Pring Special K is a cyclical indicator, uh, is back towards the overbought area, which was seen near prior tops. Combine this with simple moving average, on the indicator, which SMA on indicator, and you will see its power. ये बहुत ही सिंपल वे है मार्केट को देखने का. एंड यहाँ पर अगर आप कंबाइन करेंगे, यू विल बी एबल टू सी इट्स पावर. सो वी कैन कंबाइन वेव थियरी विद टाइम. We can combine different techniques along with time, and once you combine different methods and techniques with time, you will be able to forecast it extremely well. So overall, looking at this chart, seems that we are near that zone, and we might reverse there. So time cycle indicators, along with the cyclical parameters, we can clearly see there is some kind of a hurdle in the market. So दोस्तों ऐसा है कि once you combine these parameters of time, you can see, especially if you are an option trader, it is very crucial that अगर आप options में trade करते हो, market को time करना बहुत बहुत important होता है. क्योंकि if you are trading in options, you might see that market आपके favor में जा रहा है, फिर भी options नीचे जा रहा है. So my strategy as a trader now is to sell options to ride this trend, because I know that the momentum is going to be less until 16th of August. बाकी तो भाव भगवान छे, समय बलवान छे, ट्रेडर पहलवान छे, ये बहुत ही क्लासिक है. प्राइस इज गॉड, टाइम इज पावर एंड शक्ति. सो एंड ट्रेडर शुड बी डिसिप्लिन. सो the overall science is suggesting of time that there is a possibility of reversal, and it is suggesting that the momentum is going to be less. So if that is the case, I can very clearly now say that if the momentum is less and there is a possibility of reversal, I might want to uh, be careful in the market for longs, but I can still ride it by selling options. So ये वीकेंड पे दोस्तों, सैटरडे और संडे को काल चक्र 2 दिन का सेशन है, जिसके अंदर हम देखेंगे डिटेल्ड में how to use this Hurst time cycle on various time frames, right from 5 minutes, 15 minutes, 1 hourly नहीं use करेंगे, 75 minutes daily, weekly, monthly, and how to derive those time period. Along with that, we are also going to be combining, we will be combining the entire concept along with the Gann square of 9. हम एक stocks पे भी Gann square of 9 के levels निकालेंगे. And plus, we are also going to look at Pring KST के अलावा भी हम देखेंगे centered bowling up bends को कैसे use किया जा सकता है, FLD को कैसे use किया जा सकता है price forecast के लिए. तो दोस्तों ऐसा है कि मार्केट को ट्रेड करना पॉसिबल है प्रॉफिटेबली, एंड स्पेशली if you want to know the science of time. Very few people talk about the science of time. I can be one of the few who is talking about the science of time and detailed fashion mein. Then you have to be a part of this weekend program which is going to happen. And there are many questions that is there. Please share the link across. I can see यहाँ पर ITC is all-time high as per the 55-day cycle. Yes, you can do that. From exact 23,300 being a top multiple times, and in both times in the 4th June we broke the exact spot. Okay,
Um, it's been a while. And Adhru Purana, it's great to have you always here. Thank you for the kind words. He's saying that Mr. Kyal is one in a million who understands the market and is willing to teach the working. Thank you very much for the kind words. And so the market looks overstretched. Absolutely, Sunil, कि यहाँ पर है. And budget भी आने वाला है market में definitely. And मुझे तो लग रहा है कि जो भी गड़बड़ शुरू होगी वो वहीं से होने वाली है. We are entering into the topping zone, guys. I might be wrong. देखिए 100% short नहीं है. I can be wrong. But if you have the techniques, if you have the tools to forecast the market, you can do that. And it's a simple learning that is going to happen, as I said, over the weekend. And I'll just share the link across with every one of you. You can be a part of this wonderful learning experience. And as I said, if you miss it this time, you might not know the concepts of time. So दोस्तों आज का एक जो announcement मैं करने वाला हूँ, it is purely about time. I am also going to share across the link. I am going to take a very quick poll just to understand which is your path to financial freedom. I want to know. हमारा ब्रह्मास्त्र सेशन भी स्टार्ट हो रहा है with the weekend training starting. हमारा private telegram group is going to be formed with the weekend training which is going to start. And up till now, every single target that I have given has been achieved. Gann target जो 24,728 है उससे थोड़ा सा नीचे हम रह गए और अब भी थोड़ी नर्वसनेस लग रही है मुझे मार्केट में बिकॉज नाउ द टाइम इज रनिंग आउट. कहते हैं ना दोस्तों, अगर समय सही हो तो पत्थर को भी सोना बना दिया जा सकता है. और समय अगर समझेंगे तो हम मार्केट को सही तरीके से ट्रेड कर सकते हैं. यू कैन इंक्रीज योर एक्यूरेसी ड्रास्टिकली if you know how to trade the market. Deepak is already a part of Kaal Chakra. Fantastic. Sahil Oberoi is saying, sir, I had 20% profit today in option buying. Squared off when you tweeted to be cautious and premium fell after that. Awesome. तो देखिए ना कैसे एक एक ट्वीट जो मैं कर रहा हूँ is working exceptionally well. IT is the defensive sector. Yes, absolutely. मैंने आज ही एक मंथली रिसर्च में लिखा है about how IT can be leader. From here, the defensive stocks can be leader, and you have to be cautious basis of what can come over next few days. But dosto, this is the mother of all bull markets. Whatever we are seeing right now can be a short-term profit booking, but you will again have an opportunity from 16th of August. So you have to be ready with the strategy. जो मैं ये weekend पे करूँगा, I'm going to give you an Excel sheet with for some stocks जिसके अंदर हम time और gain levels mention करेंगे. We look at FLD concepts. We look at the Pring Special K का concept. कैसे उसे apply करना है. कैसे 5 minutes पे आप scalping trade निकालना चाहते हो तो कैसे निकाल सकते हैं time को use करके. I'm going to do all of those things. Devang, yes, I'll be sharing those things across. And यहाँ पर मैं आपको weekend पे दूंगा. मैं एक्सेल यहाँ पर नहीं शेयर कर रहा दोस्तों. ये 10 to 4 का जो ऑनलाइन मॉड्यूल है वहां पर इट्स अ पेड प्रोग्राम एंड सिंस द अर्ली बर्ड इज ओवर बट आप लोग मुझे अपना टाइम दे रहे हो. सो वी आर गोइंग टू बी अलाउिंग द पीपल हु आर हियर विथ मी फॉर वन लास्ट कॉल, वन लास्ट टाइम टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सेशन, टू बी अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी. एंड यहाँ पर मैंने स्क्रीन शेयर की है आप लोगों के साथ में. यू कैन डायरेक्टली रजिस्टर योरसेल्फ ऑन दिस पेज. आप जाके रजिस्टर कर सकते हो. हमारा मेंटरशिप या ब्रह्मास्त्र प्रोग्राम भी आज से शुरू हो रहा है where we will be you will be looking at all of those things. And if you are registering today, I'm going to give you 5 bonus videos as complimentary. You will be getting the recordings of the session to दोस्तों. और साथ ही में post the 2 days एक follow up session होगा हमारा 10-15 दिन बाद. So you don't have to worry at all. The pricing is going to be 22K plus GST. Early bird has ended. Just because आप लोग यहाँ पर मेरे साथ हैं, I'm giving away that pricing. What can be expected out of these 2 days for people who have already enrolled? We'll be looking at intraday trade setups, positional trade setups, how to look at options to capitalize on this, and if you want to generate passive source of income, ऑप्शन सेलिंग कैसे की जा सकती है बेसिस ऑफ टाइम साइकिल, बिकॉज मैं खुद करता हूँ. दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर अक्रॉस.
आई वोन खिलाड़ी नंबर 1 शो 29 टाइम्स। अगर आपको पता होगा तो, अगर आप ब्रह्मास्त्र के पार्ट है, आई विल बी डिस्कसिंग दैट, हाउ टू क्रिएट दो स्टॉक सिलेक्शन एल्गोस। मैं उसमें बात करूंगा। आई एम ऑथर ऑफ एन इंटरनेशनल बुक ऑल्सो दोस्तों, वर्ल्ड वाइड पब्लिश हुई है ये बुक। दिस इज द बुक, यू कैन सी दैट इट्स पब्लिश्ड वर्ल्ड वाइड अक्रॉस, so you need to be a part of this amazing journey. The recording will be with 1 month access. The validity of this recording will be for 1 month. And कोई भी doubt है तो I am always there. Traders forum is there where we are active. I keep responding to every single question that you might have on the traders forum also. So I'll be open to answering your questions. You can post your questions with me, and I'm taking a poll. I'm also going to share across very quickly for people who want to participate in this poll. You can just scan the QR code. Just give me a second. यहाँ पर ये QR कोड मैंने रखा है दोस्तों, आप स्कैन कर सकते हो, और साथ ही में once you scan you will be able to participate in the poll. So people who are there on YouTube, if you want to be a part of this wonderful learning experience which can transform you as a trader, you can simply register here on the link which I am sharing across. And you can also enroll for the Brahmastra program, which is going to be starting with this weekend, where we will be looking at all of those things in detail. Open for questions, guys. Any questions, please? Shriram, please आपका contact detail share कर दीजिए. If you have any query, my team can help you out. Okay, there is a question here. Can I pick up multi-bagger stocks by looking at this setup? Yes, of course. तो जो भी हम कर रहे हैं, you will be able to pick up multi-bagger stocks also basis of time. And अगर आपने नहीं देखा होगा तो TVS Motors और बहुत सारे stocks की मैंने बात की थी, which has worked exceptionally well. So you will be able to do that. There is another question here, just a second. And Gulshan, yes, you can be a part of this class over the weekend. I can see here Deepak has registered for the session. Okay. And what's the view on F&O being taxed with the premium rise in the budget? See, उससे डरने वाली बात नहीं। अगर आप मार्केट में बने रहना चाहते हैं, टैक्स लगाए या नहीं लगाए, पैसा कमाने से मतलब है। अगर टैक्स लगाया तो हमें डेफिनेटली ज्यादा कमाना पड़ेगा, क्योंकि हमें टैक्स भी पे करना है। टैक्स तो वैसे भी पे करते हैं। अगर फ्लैट टैक्स लग गया 30% का, तो हमें कोशिश ये करनी पड़ेगी कि हम कैसे बनाएं और ओवरऑल एक्यूरेसी को मेंटेन करें, जिससे हम लॉस में ना जाए इवन आफ्टर पेइंग द टैक्स। दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। लॉट साइज अगर इंक्रीज भी हुआ, आई एम गोइंग टू शेयर अक्रॉस सर्टन मंत्रस ओवर द वीकेंड, बेसिस ऑफ विच अगर लॉट साइज इंक्रीज भी हुआ तो कैसे आप हेज करके, इवन इफ द लॉट साइज हैज इंक्रीज, यू डिड नॉट हैव टू वरी। तो वो कैसे करना है, वो सारी चीजों को मैं बात करूंगा आपके साथ में। एंड निफ्टी के टारगेट भी यू विल बी एबल टू डिराइव फॉर योरसेल्फ, हाउ इट कैन हैपन, आर वी हेडेड टुवर्ड्स 25,000. We will be discussing all of those things in much detailed fashion. Okay, so don't worry about lot sizes, don't worry about taxes. So there can be implications of that. Liquidity will reduce. There can be short-term correction, which is possible. But then there will be an opportunity for you to re-enter into the market with a clear strategy. That's how it can happen. So I'm just sharing across the page again from where you can register yourself, and that's the page. And in case you want to be a part of Brahmastra, you can also pay a 10K token and be a part of Brahmastra program. So you can simply do that. Okay, guys, aaj ke liye I think that's it from my side. It's fantastic to have you all here. This is the last call. If you can act, you have to act now. If you miss this opportunity, then you miss it for good. So you have to ensure that you are acting now. And यहाँ पर you have to be a part of this learning experience. Thanks a lot. Have a wonderful time. And we have only limited seats left. So from tomorrow, you will not be a part of it. So ensure you are there with me. Okay, guys. Thank you very much for joining in, and have a wonderful time.